Hey guys, welcome back to the code behavior. So in today video we'll see about login form in Angular. In previous video we have created a login page, and now today we will validate the form and submit the login form. Okay. So अगर हम कोड में देखते हैं तो कोड में हमने अभी तक क्या किया है कि हमारा जो अब हम लॉगिन पेज देखते हैं तो लॉगिन पेज हमने क्रिएट कर दिया था। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है इसको हम वैलिडेट करेंगे और दूसरा जो काम है वो सबमिट करेंगे। ठीक है। सो वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक जो हमारा फॉर्म है इसको हम एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं। सो रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा हैज़ लॉगिन फॉर्म इज इक्वल टू एनजी फॉर्म। ठीक है। ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, हम एंगुलर में कैसे देते हैं किसी फॉर्म को। सो इस टाइप से देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस होगा, यहाँ पे हमें एन जी सबमिट लगाना पड़ेगा। सो एन जी सबमिट इज इक्वल टू हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट वुड बी लाइक सबमिट फॉर्म। ओके। सो या सबमिट फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे। कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इनटू द टीएस फाइल। ओके। सो हमने क्रिएट कर दिया, जिससे जो हमारा एरर है एरर वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, एरर रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप कंसोल कराते हो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। तो हमने लिखा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो लेट्स सी, कंसोल हम ओपन करते हैं यहाँ पे। So when we see into the console, okay, yeah, let's cross it. Okay. And when we click to login without entering the username password, so what we can see here, I think there is issue or not, because we cannot see the console part here. Submit form console.log. So यहाँ पे when we click to login we cannot see the console, so we need to check the reason. So ng submit is right here. So what we need to see here, when we go login button, so यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, type is equal to submit we have to write here. So type is equal to submit. Okay. Now let's see. So when we click to login form submitted successfully, we can see like we have created a submit function, it is working properly. Okay. Again, one thing we can do, like login form, we can provide here login form because it is referencing to the current login form. So with the help of this we can get the data of login form. Okay. So now the term is we have to create the validation for the email and password. So we need to modify, like type is equal to email, and autocomplete, here we have to do like autocomplete doesn't needs here. So let's remove this, and placeholder is like email. And one more thing, like we can use here ng model. सो एनजी मॉडल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन लेफ्ट पैरेंथेसिस एनजी मॉडल, एंड here we will provide email. But what we see here we can see the error property email does not exist on type, because this is a two-way property binding and we need to declare a variable here. So just write here public login form data type we are provide here, and we will declare a empty object. Okay. So now we will use login form data variable here, and the error will remove. And with the help of ng model we always use the name property. So just like this, write like this, and next just remove this, and we are using here type is equal to email. Okay. So we have used type ng model and name here. Okay. And yeah, a placeholder should be email. Yeah. Now just copy this
ng model and name, and put it for password field also. So this would be for password and name would be password. Okay, one more thing, like we can pass here, like this is a form reference variable, so just put it here, and into the component file we can get here and type should be any. Okay, so now we are done. So next what we have to do next, we will validate this form. So for validating we need to use this login form reference variable. Okay, so now we will create a div section after the input field. So let's create this, and here we will provide for the condition inside div like ng if. ओके और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मल्टीपल समय कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। मल्टीपल कंडीशन किसके हेल्प से, लॉगिन फॉर्म रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। सो वी हैव टू राइट लाइक लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के यहाँ पे एरे में आपको पास करना है ईमेल। ओके, सॉरी, just put inside array। ओके, लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स ईमेल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनवैलिड डॉट इनवैलिड। ओके, इनवैलिड है, या फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं अभी कुछ एरर थ्रो हो रहा है या ओके। एंड हमें लगाना है यहाँ पे दो चीज़, लाइक जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट, कॉपी कर लिया हमने, एंड दिस वुड बी अंडर द और, एंड व्हाट वी सी हियर, पहला हो गया कि फॉर्म हमारा इनवैलिड है। नेक्स्ट हो गया हमारा कि या तो डर्टी है, DIRTY डर्टी, या फिर आप कह सकते हो डस्ट। ठीक है, दो केस हो गए। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एरर शो कराएंगे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है। डिव क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है, लाइक जस्ट वेट ng if एंड लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स ईमेल, एंड यहाँ पे हमें पुट करना है डॉट एरर्स एरर्स डॉट रिक्वायर। सो इस केस में अगर हमारा एरर लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स ईमेल और रिक्वायर्ड यहाँ पे आता है, ठीक है, रिक्वायर्ड आप यहाँ पे एरर क्या थ्रो कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल, रिक्वायर्ड में कम्स फ्रॉम इंडेक्स सिग्नेचर। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये है इनपुट फील्ड, इसमें हमें रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। सो वी हैव रिटन द रिक्वायर्ड एंड या डॉट एरर्स डॉट रिक्वायर्ड। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास टेक्स्ट डेंजर, और डिव हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हम देंगे यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। So actually we are getting error here, like for errors and required. So let's check once. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो एरर्स आना क्या है कि स्वाभाविक है। सो सबसे पहले हम एरर यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल, एंड सेकेंड एरर है प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम एन इंडेक्स सिग्नेचर, सो इट मस्ट बी एक्सेस विद रिक्वायर्ड। ठीक है, सो पहला ये है कि हमें यहाँ पे नल हैंडलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नल हो सकता है। ठीक है, सो नल हैंडलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज़ नल ऑपरेटर हियर, ये नल ऑपरेटर है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में। और सेकेंड डे बोल रहा है कि इसको हमें कैसे एक्सेस करना है, इस फॉर्म में एक्सेस करना है। ठीक है, एक तरह से एरे इंडेक्स के फॉर्म में यूज़ करना है।
सो इस केस में हमारे पास क्या है कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल। आई थिंक वीडियो इज़ गेटिंग मोर लेंदी इफ़ यू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट वैलिडेशन पार्ट के बारे में, वेयर वी विल कवर ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वैलिडेशन। सो गाइज वीडियो लेंथी इसलिए हो गई क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे जो एरर्स जो आते हैं उसको हमने कवर किया है और उसको आपके साथ ही हमने फिक्स किया है। सो गाइज बिकॉज फॉर डेवलपर्स एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच रिव्यू एंड फिक्स दैट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेयर वी कंप्लीट ऑल दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वैलिडेशन। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।